जी है इस वेले इनफैक्ट हुए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 161 ਸੀ। आई थिंक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहना ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ we used to have testing only up to about 700 people ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 2200 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ and now we are nearly 10,000 and ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਹੋਰ labs ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ we have given the money and I hope that by end of July I'll see instant 20,000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ। This testing is the answer for this। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ 100 ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ roughly average 150 confirmed cases every day ਆ ਰਹੇ ਨੇ। consolidated ਹੋ ਗਏ 50 to 116। unfortunately ਸਾਡੇ अगर अपन कंट्रोल च लेना मैं कारण ये दसदा कि कई पता नहीं होंदा कि ऑर्डनरी फ्लू है कोई होर बीमारी है वो डॉक्टर करोना के सेंटर्स से जाते नहीं टेस्ट कराने वास्ते जुकाम हो गया जी या बदन दर्द हो गया जी या समथिंग लाइक दैट स्टमक खराब हो गया और जाते ने उदों जब डॉक्टर कहता यू हैव करोना एंड 8-9 दिन द टाइम टू गो इज बिफोर 8 days फॉर ट्रीटमेंट। फिर उत्थे सर्वाइवल रेट्स आर वेरी हाई और जब तुम 8 दिन टपा दो दैन यू गेट इन टू ऑक्सीजन डिपेंडेंसी या वेंटिलेटर कंट्रोल विच बिकम्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम ये बन जाती है। सो थोड़े राही आई होप कि तुम इस गल नूं थोड़ा जिहा साडे वास्ते इनू होए नज़ला होए बॉडी एक होए ये ना समझो कि मौसम बदल रहा है वो करके हो गया। स्ट्रेट अवे अपने डॉक्टर को जाओ गेट योर सैल्फ और चैकड अगर वो भेजता है जिथे कोई सारा इस कोविड सेंटर है वो जाके अपना प्लीज़ चेक करवा लो। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसी कारण जो असी पुश कर रहे हैं और मिशन फतेह ये सारिया गल्लां दसिया जांदियां ने। लॉट ऑफ बड़े बड़े जोड़े लोग ने इन फिल्म इंडस्ट्री एंड अदर्स उन्होंने साढ़े वास्ते आके बड़ा ग्रेटिस काम किया है ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ऑपरेशन फतेह मिशन फतेह ते उसका असर जरूर पे लोग जागृत हुए हैं। सो दिस इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी डू। सैंपल्स टेस्टेड पॉजिटिव साढ़े जैसे मैं दसिया सी तुहानूं 5218 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ जो डिस्चार्ज करते बंदे ट्रीटमेंट करके जोड़े समय से आए थे वो 3576 एंड सो बेसिकली वी स्टिल हैव 1506 जोड़े हाले ट्रीटमेंट के अंदर ने। सो कंपेयर टू द कंट्री कंपेयर टू अदर स्टेट्स कंपेयर टू महाराष्ट्र तमिलनाडु हरियाणा यू नेम इट जिथे बद रहे कम वी आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। माई फेयर इज ओनली दिस 22 people are or 23 people on high dependency unit on oxygen and 7 people are on ventilators. I don't want any one of my Punjabis to be in this sort of situation. That is why it is जरूरी है कि treatment symptoms on ही वो अपने बंदे जाके अपने डॉक्टर को प्लीज़ मिलो। मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब में एंड आई होप कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को कन्वे करोगे। जिथे ताईं साढ़े अरेंजमेंट्स ने तीन तरीके के अरेंजमेंट्स किए हैं फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3। फेज़ 1 के विच इज़ अप टू 10,000 के करीब अगर कोई पेशेंट्स हो। We have got arrangements of 4,246 beds currently, 2,014 जो साढ़े तैयार ने, another 949 in the private sector beds we have kept reserved. Total 52 government and 195 private hospitals have been booked for these corona incidents जैसे जैसे ये चलेंगे। Now after 10,000 when it crosses, if God willing it doesn't cross 5 करे ना आए हुए, लेकिन अगर असी देखते हैं कि 5,000 पहुँच गए
साढ़े पेशेंट inpatients. Here we will activate the phase 2, where 10,000 beds are being added further. They have been identified her district and her city and we will activate them and we'll start. Then if we reach 10,000, which is half of 20,000, then we enter phase 3, where we have made another 10,000 bed arrangement. The hostels, university hostels, college hostels, school hostels, whatever, where we have earmarked for an emergency type of situation. As far as materials are concerned, cataract operation कराया सी ना तो और पढ़ा ही नहीं करता। Ventilators, we have a total number available to us 554. 15 we have just procured from the market and 93 are on order. So Saturday we will have well over 600 ventilators. As I told you, only 2 patients are on ventilators at the moment. N95 masks, Saturday available stock is 4,70,000. Plus we just added on another 46. Another fresh orders have been placed for 4,60,000 and total available stock so far is 5,18,000, so we have no shortage of that. Similarly, triple layer masks available 75 lakh ne और 60 लाख ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, so we have plenty of, there's no shortage of triple जो मैं पा रहे हैं इस ਵੇਲੇ. PPE kits, we have available stock of 1,64,000 plus 88, that means about now 2 lakh something. We have fresh orders placed for 4,63 and total available in our hospitals at the moment is 2,52 in reserve. Oxygen we have no problem. AJD beds only about 2,223 beds are going to be with oxygen or oxygen dependent, high dependency, which are recorded this way. 23 patients. 7 on ventilator and 23, but it's all reserves at we don't have any trouble in that score. I hope that Punjab de vich a problem now because problems, here is what I have just sent to the Prime Minister. Memorandum of the Government of India seeking fiscal and non-fiscal assistance from government. We have covered all our area. We estimate that by the end of this financial year, we will be about 30,000 crores short of revenue. Our current GST will be reduced. The industry you don't have, our trade is going down, the industry will certainly go down. We have received only 2,200, that is January, February, March GST. April, May, June, the only and I hope they will give it in time, plus some other grants that are due to us. Lekin 30,000 crores worth of shortfall, which we estimate, और ये हाले सानू पता नहीं कि एक कोविड जाना किथे है. As far as indications are concerned, we will reach a peak, some say July, some say August, September, October, November, could be any time. There is no clear-cut method of this escalation and we have to be carry karni payegi ki kade bhi wo ho sakta hai, like it's happening elsewhere, unless asi apni protection na kariye. Protection hai koi tarika hai, sari duniya de vich jo de vich chal rahe hai, the doctors, jo scientists are saying 75% protection is only by wearing masks. Agar tusi masks samay se pa lo or rakho as proper times, that is 75% of your chances of getting infection are not there. So and then of course washing your hands, social distancing वगैरह वो दूसरी करना नहीं. उन्हें सवाल मेरे को आते नहीं कदे कि कदों फिर लॉकडाउन चकोगे, लॉकडाउन चकन का या लाउन का या फर्दर बढ़ाने का मैं कुछ नहीं कह सकता. दैट मुझे समय दसो कि उत्थे की हालात बन जाने. One thing I can assure you, पंजाब दे विच अगर ये फैलन दे कोई chances ने,
I will act firmly. I will not let this spread in my state. I have to do my best, and I will do whatever I medically. We have a team which advises us of very eminent doctors. Dr. Talwar is there, Dr. Rajesh Kumar, who community medicine, the head say in PGI, is retired. Then Dr. Raj Bahadur, who is the Vice Chancellor of the Baba Farid University. They know doctors, and Dr. Talwar used to be director of this PGI, and is one of India's most renowned heart specialists. So this team tells us what to do, and I will go by the team's advice. If they say what to do, I will do it. औखा जरूर लगूगा सानू, क्योंकि people get fed up. मैं भी fed up है, तुसी भी fed up हो. कितनी देर असी अपने आप घरां च बैठे रहांगे, but there it is. साढ़े हाथ तो बाहर है ये गल. So that is as far as COVID is concerned. दूसरी गल मैं जो कहना चाहूँगा, which I think all of us are today very concerned about, China's influence, which is policies which are साढ़े मुल्क को I think खराब कर दी पूरे लगे हुए ने. We have had constant irritation from China since 1959. 62 तक लड़ाई हो गई सी साडी. उस तो बाद कई बार साढ़े नाल border clashes हुए. We had it in Jalapla, we had it in Natula, we had it in parts of this Chola, then we had another clash in Doklam, which was just last year. This is not the first time. 1962 which we Galwan Chwensi. We had in the same places, whether it is Galwan Valley, Daulat Beg Oldie, which is hot springs, Sare, Uthe Ladaiyan Huiyan Siyan, Sade Bande Shaheed Hoye se. I remember in hot springs there was a company of 5 jats under Major Ajit Singh, उन्होंने भी याद है कि उठे अगले पासे at close to Darmuk. There was a company of again 5 jats under Major Haspanis, Shaheed Hoye सारे उठे मरे. Daulat Beg Oldie which there was Subedar stopped them from 14 jack rifles. वो ते उन्हें सारे बंदे उठे शहीद करते थे उन्होंने. So ये उन्होंने पुरानी planning है to tackle us. Now Galwan is what? Galwan was a post which was patrolled up to the patrolled, was patrol की थी. Patrol लो तो साढ़े नाल clash करके उन सारी वैली को claim कर ली. एक नाला चल रहा है, वो तो नाम Galwan नाला है. Oh, that empties into the Shiok River, and Shiok River is in the Shiok Valley, and Shiok Valley to right, it's a 240-kilometer road which goes right up to Daulat Beg Oldie, and Daulat Beg Oldie has our advanced landing ground also. So this gap of Daulat Beg Oldie is between Siachen Glacier, Pakistan का control है in Siachen, and साडा control, but they are our adversaries. लेकिन सामने वाला जो पाकिस्तान का हिस्सा सी, halfway down the Siachen Glacier, they have given as a gift to China. POK territory, जो हिंदुस्तान की territory सी, उन्होंने जाके उन्होंने दे दी थी. And today they are occupying that. And the objective is very clear. They want to close this gap between Siachen and so that India has no access in this region. In erstwhile Kashmir, जो 1947 with Kashmir see, that whole border is now going to be, outer border is going to be China if they close this gap. That is why I am sure the government of India is taking military precautions, जो भी लेते हैं, and the diplomatic system which they are working on. But I think this is something that we have to be very careful of, that their intention is to close that gap between Siachen and Siachen and cut off any access into Tibet, into China from the Kashmir side. वो एक and while this is going on and we are losing boys, साढ़े पंजाब दे 5 नौजवान साढ़े शहीद हुए हैं, 2 from नैन सुबेदार, एक राजपुरा तो एक गुरदासपुर तो. They are from the 3rd Mountain Regiment, the 3rd Medium Regiment, which is a pure Sikh regiment of the Indian Medium Artillery with 155 Bofors guns. And then you have
3 boys from our 3rd Punjab, 2 साढ़े पंजाब के मुंडे, एक संगरूर तो, एक मानसा तो, और एक हमीरपुर का. There was a young boy who was also killed in Himachal Pradesh. 3rd Punjab is one of India's oldest regiments and has half 2 companies of Sikhs and 2 companies of Dogras. All the Punjab regiment is on that. So this boy who was killed is a Dogra boy from Himachal Pradesh. So it's very sad that this is happening. In addition to that, there was 16 Bihar, 1 boy from 13 Bihar, and now yesterday we lost, day before yesterday we lost a young man from Patiala, who was from 58 Engineer Regiment. So it's a very sad thing that is happening in that area. But that is the job of a soldier. I'm sure they will do their job as expected of them. Indian Army is a highly professional army. But while these things are happening, I think we must take a tough line with China. And मैं थोड़ी गलत ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ which I think should not be happening in this time. This letter note has been sent to me by somebody, and this is correct. Then I think the Prime Minister has received in various funds various sums from Chinese companies, which I believe sums or whatever. I'll read them out to you. The PM has received the foreign funds despite the overt Chinese hostilities in the year 2013 onwards. The question is, has PM received 7 crores from the controversial company HUAWEI, I don't know how to pronounce it. Does HUAWEI have a direct connection with the People's Liberation Army of China? That's one. My point of saying this is only this, that if this money's come from various countries into various governments who contribute, but when there is confrontation going on in this time, if any money has been received, that money should be returned back. I don't think we can afford to take Chinese money when our boys are being killed and our Indian territory is being aggressed on. So this is one of the things. 7 crore in from this company. TikTok facilitated a donation of 30 crores to the controversial PM Cares Fund. Has Paytm, which has 38% Chinese ownership, given 100 crores to this relief fund? As, again I can't pronounce it, XIAOMI, the Chinese company, committed 15 crores to the controversial fund, same fund. As the Chinese company OPPO donated 1 crore to the controversial fund, and has the Prime Minister diverted the donation received in PMNRIF to the controversial PM Cares Fund, and how many crores is being sent to this? Now these are questions which have been circulated and I have received a copy. Now it's not a question of how much money has come or not. Even taking 100 people from the Chinese at a time when number one, they are responsible for COVID, and number two, they are responsible for aggression in my country. I think it is time that this money, whatever has been received from Chinese companies, should be returned to them. I don't think we can easily manage without that. India doesn't need Chinese money to look after ourselves. We'll do it on our own. So this is one thing which I wanted to do. Rest, I know, I'm sure, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ हैं, थोड़े कोई सवाल होंगे, should we open ourselves to that? ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਜ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਲੱਸ ਕਈ ਕੱਟਸ ਲੱਗੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
कई सैलरी कट्स लगे हैं, गवर्नमेंट की कोई योजना इन्हां लोगों वास्ते है? पहला तो डेफिनेट कर सकते हैं कि सिचुएशन इज मच इम्प्रूव सिंस ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟਲੀ 100% ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨ ਦਿਸ ਯੈਸਟਰਡੇਜ਼ ਫਿਗਰਸ 2,56,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,33,000 ਯੂਨਿਟਸ have reopened and 15,70,000 employees have been taken into these units। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੇ, ਪਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15,70,000 ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ 2,72,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਗਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ 40% ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਅਗੇਨ, they have to get their orders। अच्छा जितने orders से हम आए थे मुल्कों के विच जिन्हों ने एक्सपोर्ट ही बंद कर दी, they have to renegotiate, reopen करके मटीरियल भी लेना, मैन्युफैक्चर भी करनी है, शिपिंग भी करनी है, and marketing is going to be a big detail। So they are working at the moment 40%। I hope that this 40% in the next 3 months will come up to 100%, and naturally जब 15,60,000 will grow to maybe 25-30 lakhs, I hope that will happen। And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 400 ਟ੍ਰੇਨਸ ਕਰਕੇ 5,60,000 ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਐਂਡ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਂਡ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। So it's a good sign that's happening. Production will pick up, industry will, jobs will be created, and Punjab's revenue will also start going up। ये साढ़े वास्ते बड़ी ज़रूरी सी इस हालात के बीच। ABP News to Mr. Asim Basri। Good afternoon, sir. Sir, tomorrow, like the day is left for 30th June. The Punjab government to increase the lockdown in Punjab as the number of cases have really gone up. Secondly, there's a lot of confusion about the Chinese intrusion in the Ladakh sector, and you feel that it is the onus of the Indian government to clear the air about intrusion, Chinese troops sitting in the Indian side? First, let's start on this lockdown. Lockdown is so far not. In fact, yesterday, because day before yesterday, transport was people were feeling inconvenient। कारण ये सी कि पिंडा तो मिनी बसा लिया मेन बस स्टैंड थे, उतों बसा चलदियां सी। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप द डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस टू सच एन एक्सटेंट दैट 50% ऑक्यूपेंसी नाल पीपल वर लूजिंग मनी, बोथ मिनीज और दूजियां। मैंने कहना पाया कि तुसी मास्क पाओ एंड लेट दम फिल द बसेस टू फुल कैपेसिटी एंड मूव, बिकॉज लेट मी टेल यू that masks is 75% of the battle won। So ये बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी लोग जान, और खास करके buses where they will be sitting next to each other, they must have masks on। Second, you asked what about Chinese intrusion? Indian government must clear the air about that the Chinese troops are sitting on the Indian side. the Chinese troops are full। If you see the in 1962 it was more leading to though we only had one brigade there, 114 brigade, and they had 3 regiments, 5 Jat and 1 8 Gurkha rifles। वो बेचारे ने तिना ने ये सारा कुछ उनसे किया 1912 के। जनरल रायना जो साढ़े later on chief बने, he was the brigade commander there। Now we have a whole corps, 14 corps is there, which means 9 brigades, and we are very well equipped in that area। And if the Chinese think that they are going to get away with this, they are not going to get away with this। But one of the objective is something else, as I mentioned to you. It is to go from the Galwani to the Shok River, Shok cross into the Shok Valley, and go and cut us off from Dollar Bay Goldie, which is our advanced landing ground, and also area which has been occupied for the last 70 years. Indian troops have been sitting there. They were killed there in 1962 also।
So this, I'm sure, we are a professional army. I'm sure militarily, whatever steps are being required are being taken, and I have full confidence. The corps commander is General Y.K. Joshi. He was commanding 13 Jack rifles in the Kargil operations, and he did a wonderful job. And it's the only battalion of his which won 2 Paramvir Chakras, Vikram Batra and Sanjay Kumar, Nayak Sanjay Kumar. So these were, he is a very highly professional soldier, and I'm sure our his div commanders also are professional soldiers. I don't think anything we need to worry, and I'm sure they are taking whatever steps necessary. But diplomatically, the government can do what it's all, but militarily, we have to be prepared. अजीत अखबार तो सरदार हरका रणजीत सिंह जी। सीएम साहब मेरे 2 सवाल ने। पहला ये सवाल है कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ऑफर की थी कि हाँ जी Sorry, I can't recognize anyone. हाँ जी welcome. मेरा पहला सवाल ये है जी कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ऑफर की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਨੂੰ कि वो करतारपुर लांघा दोबारा खोलने ਲਈ ਤਿਆਰ है कि उन्होंने डेट भी दी थी, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल कहा कि ये बड़ा शॉर्ट टाइम है साढ़े लिए, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? I'm all for it. मैं चाहता हूँ कि करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोले। They can do social distancing. वो कर सकते हैं, कोई सिस्टम बना सकते हैं, बट उन्होंने पाकिस्तान ने अनाउंस किया परसों और 30 तारीख की डेट मेरे ख्याल कोई नहीं सी और 3 दिन आई डोंट थिंक इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बट अगर साड़ी राय लेंगे आई विल सर्टनली सजेस्ट टू देम कि तुम इन्हों खोल दो एंड जैसे सोशल डिस्टेंस। आई थिंक द वरी इज मोर बिकॉज पाकिस्तान के स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है कोविड, तो शायद एक इस कारण गवर्नमेंट की ऑब्जेक्शन हो सकती है, बट अदरवाइज if they ask me, मैं उन्होंने सजेस्ट करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करवा के खोल दें। दूसरा सवाल मेरा है सी जी कि साढ़े पंजाब के DGP जोड़े ने उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैनल करता है DGP के तौर पर सेंटर के विच और वो सेंटर च हम बतौर DGP जा सकते हैं कि कोई यहो जी प्रपोजल हैगी है या उन्होंने कोई इच्छा ज़ाहिर की DGP साहब ने कि वो सेंटर च जाके DGP-शिप का कोई अहदा लेना चाहते हैं या वो डेपुटेशन के सेंटर से जाना चाहेंगे? समझा नहीं थोड़ा सवाल। हाँ जी मैं दोबारा कर दूँगा जी। आई थिंक हाँ जी मास्क कर हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ DGP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਤੌਰ DGP ਸੈਂਟਰ ਚ ਐਮਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। What is it? Yes, no, not at all. Even if he wants to go, I'm not going to let him go. He's a good officer. साढ़े 2 empanelments हुई हैं in the police, only one, Dinkar Gupta ji, and in the civil services, only one, Mrs. Vinny Mahajan. Both have been impaneled, but they are both fine officers. I'll come to this question because एक अगला सवाल जरूर आएगा that what is going to happen, why have people been passed over. Let me tell you that there was no passing over done in that method. I wanted continuity. Continuity the menu notes. See, I don't go by religions and castes and all that. This is not it is. I want ability. Ability is the way that it should be. Our best officers should be forward. Now, as far as this is concerned, all the officers in the running are all retiring before government gives over in 22. I can't even tell you. Because I expected this question. So I have some paper here. But I can tell you the people officers. Sade called Mr. Sidhu se. He was the senior most after Mr. Karan Avtar. Mr. Sidhu is retiring, I think by next June. Then we have 2 officers, Mr. Rawal and Mr. Goel, who are secretaries to Government of India. They are senior, but they are already secretaries. Delhi ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। Then who are the others? Kalpana Mittal Barua and Satish ji जो सारे secretary home ने, they are retiring at the end of sometime later this year, September, October.
And only person of Mrs. Vinnie Mahajan's batch is who was also would have been in the running, Mr. Vishwajit Khanna, who is a revenue as chief secretary, revenue. He was retiring next June. So I have nobody other than Mrs. Vinnie Mahajan who will carry on till 1922. So it was continuity and competence. Both these officers were selected for Government of India because they are selected out of the entire IPS cadre and IAS cadre of the whole country. And I think therefore we have got the best two that could be there. Now somebody is trying to make a noise about why shouldn't a Sikh officer be. We should not look at it that way. We have to go by competence. And competence, these two are to my mind, very fine officers. We have to remember one thing, that Pakistan is Hari Chatti. Ever since I have been in government, they have been trying to create a lot of problems for me. I have that figures there with me, which you should not see. We should know that in the last, since our government came in, we have 2,500 gangsters who were neutralized in the past 3 years. 1,400 weapons have been recovered from them. 630 vehicles have been recovered from them. And I have arrested 1,500 A-class category, 25 B-class category, 192 C-class category, and 2,256 others. Now, these are all figures and more of what we have done. And this has been done primarily by our current DGP, and even if he wants to go, I'm not going to let him go. He has to be here, and so has Mrs. Vinnie Mahajan. She is one of our most able officers. And it's not right to raise a finger against them because they are husband and wife. Everyone has a right to have a job. Let me tell you in one case, this is not the first time it's happened. In the time when Mr. Rajiv Gandhi was Prime Minister, Mrs. Sarla Garewal, one of the principal secretaries, or Mrs. Sarla Garewal's husband, Mr. S.S. Garewal, was the cabinet secretary. So they can be cabinet secretary and principal secretary to the Prime Minister. So why can't you have one DGP and one chief secretary? I don't think anything wrong with that. ANP News for Mr. Jagdalpur. CM sir. सर मेरे दो सवाल मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जिस तरह सेंट्रल सरकार मोदी सरकार ने पहला बिल लाया खेतीबाड़ी के नाम पे ऑर्डिनेंस के बिल पास किए हैं पंजाब सरकार सर विधानसभा में चैलेंज कर सकती है किसी वोट के माध्यम से चैलेंज कर सकती है अनफॉर्चुनेटली the legal aspect whether she challenge कर सकते हैं ना वो मैं चेक करना पड़ेगा but you know जैसे उन्हें स्वयं बिल से पास नहीं कर सकते but Delhi doesn't really finally it's a central subject they are taking it असली कह रहे हैं पानी सारा subject है वो अपना बना चाहते हैं कुछ नहीं जैसे चाहते हैं मार्केट चल रहे हैं as although we Shanta Kumar the opposition on his support similarly is now कहीं मैं इन्हें वो कर लिया वो क्या सोचते हैं कि तुसी अपनी कोalition वाला चाहते हो तुसी अपने दिल्ली का पूछो कि असलियत की है federal structure का day by day सब खत्म कर रहे हैं the financial powers have been taken away from us और agriculture जो कर देना चाहते हैं और चीज़ पानी जो कर देना चाहते हैं हर चीज़ तो मेरे पंजाब गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लेके जाते हैं तो ये ordinance जो मिस्टर सुग्रीवाल कह रहे हैं कि I take the guarantee हुआ you to take the guarantee you are nobody it is the government of the day और एक ordinance will go to parliament हो गया will become an act and act के विच जो मर्जी कर लें उसके बाद हो गया उसी amendment पास कर लगा कैंसिल कर दो तुसी वो कर दो की करा कैसे तेरा एमएलए ऐसी तेरा एमपी आपको 500 how do we resolve this problem एक बार एक ordinance पास हो गए you get opposition करना एक कोई तरीका
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋalition ਐਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਸਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕਰੇ then God forbid ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਯਾਰ majority ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹਰ ਕਮਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ I took this stand against the wishes of my party, against the wishes of my government, and I was summoned to Delhi, and I thought I had been summoned to be sacked. I said, okay, fine. For Punjab, if I am sacked, I am sacked. I have no objection. But same they should be the attitude. कैसे पंजाब की किसानी ना करें, पर नहीं करते उन्होंने अपनी नौकरियां वगैरह प्यारे ने नौकरी करा कोई नहीं। सर सेकंड सवाल है सर बहुत कांग्रेसी मंत्री और एमएलए और ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਮੰਨਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 1922 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ what the situation is. वो होंगे साढ़े राज्य सभा के मेंबर they should do their work there and let us run the state here. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ state कैसे चलाना है. We don't need the advice of Mr. Bajwa or anybody else like Dolo. काफी हो उनके लिए है. But the fact is we don't need, we are very well concerned. यही बात होती थी एक और होती थी कि अमरिंदर सिंह inaccessible. फिर मैं पंजाब में 70 सीटें क्यों दी हैं तो there must be some positiveness in me also or not only negativeness. तो ये गल जी है ना इन्ना जो बंदे कोई पोलिटिकली अपने आप को मार समझते हैं ये गल करते हैं बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आई डोंट नो चिट्ठी पढ़ा आवाज में कितने जाने वाले बड़ी Mr. Dhirendra from ANM. नमस्कार सर। हाँ जी सर मेरा सवाल था कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेके क्योंकि क्या जी कम्युनिटी ट्रांसमिशन सर क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं अब तक और अब पिछले 2 दिन में हम देखें तो 19,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं रेगुलरली पर डे। तो लगता है कि इंडिया अब थर्ड प्लेस में एंट्री कर चुका है जहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन समस्या बढ़ रहा है। You're right. I think states like Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, I think community transmission is taking place. सारे नहीं हो जाए और यही मैं बताना चाहता हूँ। एक बार ट्रांसमिशन हो जाए then things get very bad. So मैं ये थोड़ी ना रिलीज करता है। I don't know what the government is saying, but I can tell you from what is happening in the world, it is certainly in these areas community transmission हो रही है। और दूसरा सवाल था कि कल गृहमंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो राहुल गांधी से दो हाथ करना चाहते हैं और पार्लियामेंट शुरू होगी, डिस्कशन 1962 से शुरू होगा और अब तक किया जाएगा। तो आप उस बयान को किस तरह देखते हैं? ठीक है, मैं देखता हूँ पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए और राहुल जी इसको क्वाइट केपेबल ऑफ टेकिंग एनीवन ऑन। बहस करो शुरू से, जब से चाइना के साथ हमारी चीनी हिंदी भाई भाई का स्लोगन चला था, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन कम डाउन एंड सी हाउ चाइनीज हैव डन दिस। आई मीन जिस तरीके से हमें लेट डाउन किया था 62 में, अभी फिर वही बात है। इट्स द सेम थिंग, इन फैक्ट इट्स अ वर्स्ट सिचुएशन। वो तो बॉर्डर क्लैश था, this is going to be for territorial area को ये काम करना चाह रहे हैं and strategically India will be badly affected if they hold the in the zone areas they so strategically Punjab and India will lose and that is something that we cannot afford to do. Mr. Ranjit, sorry उससे बहस जितनी मर्जी करो, this is the forum is parliament, उसमें debate करो and we are quite confident that Rahul will hold his position and bring home these points which are being raised
during this discussion. हेलो Mr. Rajiv Baby. हेलो हेलो सामने मैं सामने आई सामने कुत्ते लगता है डॉक्टर साहब 6 जून ਨੂੰ जनरल काल ने ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? मैं नहीं चाहता I have देखो everyone has their opinion जिन्ना मर्जी opinion हो आज जिन्ने सिख आज हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ prosperous ਨੇ और काम कर रहे हैं कोई सुबह नहीं हिंदुस्तान में जितने सारे सिख नहीं बैठे वो ये वो खालिस्तान को की लोग है नौकरी कौन सी मैं नहीं चाहता ये तो चाहता है पन्नू वर्गे वो जो उत्ते बैठे कमाई जा रहे पैसे स्लोगन लेके and this is unfortunate और हम लोग पन्नू 6 for justice का ये बंदे बड़े गए हैं पंजाब के विच he has gone in for active terrorism we have got weapons and we have got other hand grenades वगैरह लोग उन्हें पटियाला पड़े नहीं गए थे they were carrying hand grenades sent by पन्नू जो उन्होंने investigation में चलाई है तो पन्नू direct terrorism के विच क्या है and ये basically a lawyer है he is trying to get a death to immigration जाते हैं उन्होंने वास्ते जो कार्ड मैंने कहते हैं वो कराना है लेकिन हम आगे बढ़ गए और हमने जेडे एंड लेट मी टेल यू ये भी थोड़े भी होते वाकफ होंगे अमेरिका के विच कितनी सपोर्ट है उन्होंने अमेरिका से कुछ भी जेडे जेडे ऐसे लोग समझते हैं कि पता नहीं की कर रहे हैं कि रेफरेंडम लेगा फलाना लेगा नथिंग एट ऑल कोई रेफरेंडम नहीं होगी पता क्यों कैंसिल करती है there is no referendum and America is secretly in बिल्कुल पसंद नहीं करती so let us be clear about that one thing जितने टाइम we are all very comfortable people are doing very well in our country about 2% तो सारे लोग ने हिंदुस्तान में जितने भी तुझे जाओ उन्होंने बढ़िया काम चल रहा है क्यों छड़ के क्यों every Sikh is totally in the country. He is united to the Sikhs will stand by the unity and integrity of the country. They have always stood by. Do you know how many Sikh soldiers we have? अपने देश वास्ते उठे अपनी शहादत देने के लिए a young boy, this youngster from मानसा जिला पिछले हफ्ते शहीद हुआ है 12 चीनियों ने मार के शहीद हुआ है young boy 23 साल का मुंडा और मैं कल मुझे पासपोर्ट में फादर ने कल की थी फादर एक का है एक का नहीं है एक मुंडा ने लंबी यूनिवर्सिटी को बीए कराई और एक मुंडा छोटा 10वीं पास करके आया एंड ही इन्होंने पोते कराई तो पता ही उनकी जमीन कितनी आपने मिली है 2.5 एकड़ की जमीन है दिस इज द स्पिरिट और अपने मुंडे को कहते हैं कि मुंडा बचपन को कह रहे थे मतलब फौज से जाना होते फौज पहुंच गए और ऋषि 12 चीजें बनाकर मरे I'm sure Indian Army will do what it can. We will also do what it can. मैं और मेरा बड़ा लड़का वो तो मैं कहता मैं नौकरी करूँगा मुझे मतलब छोटी यूनिवर्सिटी में फाइंड इन सम प्लेस समवेयर एल्स और वो जो देना दे रहे हैं सारे but A has spirit. This is the spirit of the Sikhs. We fight for our country. This is our country, and I don't think any Mr. Panusha who can do much of the return कुछ नहीं लगा सकता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੈਵ ਕਲੇਮਡ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇ was built by the Chinese up to Lahore. China has been looking for entry into the Indian Ocean. They have got 2 entries. पहला था पाकिस्तान ने ना जमीन देके ग्वालियर का पोर्ट बनाता when the
Navy in the Indian Ocean as its base. Currently they have the local waters, then they have South China Sea, now they come into Indian Ocean. And Gwadar has been given the port. जितने कारकों में IC up to OIC up to Lahore. On Lahore to Gwadar they made a land route also. China the Pakistan army whether they will directly we have no information over the last 10 years have been seen in the forward lines by our troops and reports have been made accordingly. They have been seen. So if there is anything like this 100% China is पता नहीं पर जितने छेड़छाड़ हिंदुस्तान में हो सकती है वो जरूर पाकिस्तानी मदद और चाइना एक दूसरे की मदद करते हैं नो डाउट अबाउट इट ये सक्षम वैली की किने देती वो दिस इज पार्ट ऑफ पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो सारी जमीन which is under dispute in the United Nations you give it to a gift to Mr. China Mr. Chow and I see नहीं कौन सी to China में फिर दे रहे हुआ you it's a matter which is in the United Nations. लेकिन वो देती है for strategic reasons, and that is next to dollar pay only in all this area. That is why I am saying this is a matter that has to be seriously considered by government of India, and military should be fully prepared for this. मेरी बेनती है कि सवाल ही पूछा जाए ताकि सबकी बारी आ जाए। CNN आए थे तो मिस्टर मोहित मल्होत्रा। Is there Mr. Mohit Malhotra from CNN? क्वेश्चन मेरा ये था कि चाइना से जुड़ा ये काफी कुछ चल रहा है देश में और आप काफी वोकल हैं उस मुद्दे को लेकर। जिस तरह से पीएम ने एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि ना तो कोई हमारे बॉर्डर में आया और ना ही किसी ने हमारे इलाके पे कब्जा किया और वो जो स्टेटमेंट था उसका चाइना मीडिया और चाइना में की जो गवर्नमेंट है वो काफी उसका यूज कर रही है और बता रही है तो इससे कहीं ना कहीं चाइना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन आर्मी उनके इलाके में आ गई थी और उसके बाद वहां पर क्लैश हुआ। राहुल गांधी ने भी सरेंडर मोदी कहा है तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं राहुल गांधी जो fact is this एक जगह से where the Chinese had put up tent okay in our area some area ਵਿੱਚ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ and ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਚੱਕਣਾ ਉਹ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ and what happened next day the colonel of the Sonabah Bihar and 2-3 men ਉੱਥੇ ਗਏ और ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ they were prepared ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉੱਥੇ then of course ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ and ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕਦਮ ਕਰਤਾ then what happened ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰੀਅਡ और उसी जगह about 50 tanks have been posted by the Chinese. अच्छा जितने तक सारे कितने क्लैश हो रहे असी जब अपना तंबू चका रहे थे it is our territory उन्होंने तंबू जब चका रहे थे दस जो चक्कर लगे तीन वाला आते थे उन्होंने सारे टेरिटरी के बीच और जब सारे टेरिटरी के बीचों से कुछ गैर लगे तो सारे उन्होंने वो पहले तो obviously they came to our territory नहीं मरे कितने सारे बंदे they didn't want to their territory और सर लगभग हम इसी के तुझे अपना तंबू चक्कोगे जब नहीं चक्किया फिर अगले दिन सारे मुंडे ने हमला की और फिर झगड़ा हो गया बट सारे एरिया के बीच तंबू सीगा so it was entry into our area. Mr. Praveen Pandey from Amar Ujala. नमस्कार। नमस्कार। सवाल ये था सर कि पंजाब में कोविड का रिकवरी रेट क्या है और प्लस नेबरिंग स्टेट्स ने जो पैकेजेस डिसाइड किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए प्लस आयुष्मान योजना के लिए उसमें पंजाब का कैसे है? फर्स्टली तो मैं समझता हूँ कि total cases are 1% of India, 5,260. Mortality is 153, which is about 2.5%. This is the total recovery rate. What is the recovery? Testing was testing is 1.5 and recovery I can tell you is
3,528 have recovered and gone home, out of a total of 5,216. So जो अंडर ट्रीटमेंट इस वेले चल रहे हैं वो 1,586 they are under treatment. सरदार सुखबीर सिंह बाजवा हम दैनिक भास्कर। हाँ जी मैडम। जो ये मंशा है कि 2 सवाल पूछे सप्लीमेंट्री दो ना जी 1 सवाल है सर ये है कि एक तरह से है कि पिछले कुछ दिनों देखा गया है कि ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਸ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ कोविड की ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ज़्यादा साढ़े डिस्ट्रिक्ट में जितनी प्रॉब्लम आ रही है मेनली लुधियाना then Amritsar then Jalandhar and we have some in Pathankot. Other areas are reasonable under control. I have the district wise figures with Delhi but in those Delhi it didn't Delhi and I think this is because of the old style mohallas and congestion really है time में कह रहे सी कि that is spreading by contact or by not wearing masks. Surprising every day I get a report from the police as to कितने बंदे चलान कीते मास्क बिना नहीं पाया 4600 4700 4200 चलान होते हैं 150 पकड़ते which is scooter that is mainly your which is a carrier and thirdly ਜਿਹੜੇ social distancing नहीं जाते रोड यानी 4000 या 150 एक टाइम में कह रहे हैं मैं सोशल मीडिया पे बहुत बोल रहे हैं ना सब कुछ बात कर रहे हैं पर नोबडी इज बॉदरिंग कोई लोग इसको इजी ले रहे हैं एंड यही जरूरी है कि उन्हें दिमाग पाया जाए कि तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो अपने परिवार का कर रहे हो अपने गुआढ़ियों का कर रहे हो अपने शहर का कर रहे हो क्यों कर रहे हो कि औखा है अगर आप मास्क पा लें थोड़ा सा औखा लगता है बट यू हैव टू डू इट जरूर टुकड़ा है तुम फर्श से ऊपर सड़क से या जरूर तुम सोशल डिस्टेंस थोड़े नहीं बना सकते आई मीन अगर इंग्लैंड ने मानना है तो वर्ण देखो यू सॉ द पेपर जिहड़ा अखबार आया सी जेडे परसों चौथे का अखबार सी कि वो ब्राइटन बीच के ऊपर 5000 बंदा बैठा उनके नाल आया सी दे वांट टू डू इट दे कैन डू इट तो उन्होंने मर्जी है अमेरिका 1 लाख का मर चुके हैं और 20 लाख जो उन्होंने करोड़ा केस थे वायरल करे साढ़े का बड़ा अंडर कंट्रोल है इवन इन इंडिया I think we are the best, one of the best from our side. So, सारा हरियाणा सब तो कम हो गया, but we are maintaining it. ताकि सारे वास्ते बहुत जरूरी है कि एक रहना चाहिए। Second question is sir कि जो तरी सरकार सर बनी सी की 2-3 चीज़ां सी जैसे एक माफिया और बाकी माफिया जहाँ लास्ट पास गवर्नमेंट ने एक्शन रखते सी उनसे लोगों ने छोटे भेजा से नहीं माफिया तो जुदा सर अलग माफिया साइड माफिया एक माफिया अजय भी थोड़े कांग्रेस के एमएलए और काफी जिले में साढ़े को इन्फॉर्मेशन दी देखते हैं कि थोड़ी सब कोई इतना की इंटेलिजेंस नहीं है कि रेप माफिया के बीच थोड़े एमएलए ना जो हालात बनाए ने जो चल रहे हैं सब आपको फीडबैक नहीं मिल सब क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जो 2000 जो सीएम साहब थी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के और शायद उन्होंने सख्ती नहीं कर रहे सर ये अक्सर गाले को 2 साल में इलेक्शन नहीं आनी है तो उससे जवाब देंगे तो की चाहने वाली थी मैं डर रहा हूँ थी फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चोरी का चोरी होती है एंड द पुलिस इज वर्किंग ऑन इट डेट थोड़ा क्या है बंदे बचा के जेडे ऐसी पिकअप करने मेरे को आई हैव हियर फिगर उसी के लिए सवाल की करोगे मेरे तरफ Details of illicit liquor distributors are on. This is all the details and all the figures that have been gone. The police has got them. ये इन्होंने फट के अंदर काटे हैं और कोई अपनी शराब बनाना चाहते हैं कोई चोरी
अभिनंदन रहती थी कोई कुछ कर रहे तो वी आर ऑन द टॉप ऑफ इट जिथे होता है असली ਉਹਦੇ ਚ एक्ट करते हैं बट अगर चोरी का इंसान के जो 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 मुल्क ने उन्होंने हर मुल्क के चीज़ा होती हैं whether they are democracy, whether it's an autocracy, whether it is a totalitarian system like in China, तो लेकर China चोरी नहीं होती people होते हैं सिस्टम हो रहा है तेरा चोरी करने में कोई बात नहीं है but here the system is different but ये का मतलब ये नहीं कि पुलिस नहीं अपना एक्शन कर रही एक रिपोर्ट है मेरे को हुई आई है this is on illicit distribution which is with the police has found तो यही रहता रहा मैं रहता doing it my minister doing the best सरकारें की जितना हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट सारे डिप्टी कमिश्नर are working our SSPs are working सारे के तो we are trying to bring them much under control but तो पता है चोरी चोरी भी है we can't and पहला तो सब कैसे जरूर करें let me tell you that we are trying to जेडे बंदे CI की गला करते नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they are in the lockup and we are prosecuting them as much as ਅਸੀਂ कर सकते हैं ताकि कोई दबाव रहे कोई डर रहे ऐसे ना खुली छुट्टी है जो ਤੁਸੀਂ करना चाहो है वो कर जाते हैं Mr. Kailash Nath from Delhi. सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं और सर पहला तो ये कि क्या कैबिनेट में कोई रिशफल की संभावना है क्योंकि बार बार ये बात होती है कि मिस्टर सिद्धू डिप्टी सीएम के लिए वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं देखिए पहली बात तो ये है जो मैं कैबिनेट की रिशफल की बात सुनता हूँ आपसे सुनता हूँ मैं तो सुबह उठ के पढ़ता हूँ कि मेरी रिशफल हो गई मुझे तो मालूम नहीं कि क्या हो रहा है जैसे यू पीपल की राइटिंग के रिशफल हो रहे हैं तो रिशफल उसी उम्र में 10 लोग के कितने का हो रहे थे कि कौन करा रहे और कितने हो रहे but I know nothing about it and I know at this time we are in a very critical situation my ministers are working very well and let them get on both Gambhir is doing a good job in health and Soni ji is doing it in medical education सारे कोविड की लड़ाई में छुपाए हुए सारे भाजपा की involved in every minister is involved in his own way so एक लड़ाई करना चाहता पर है फिर की बात करांगे ऐसे नहीं अच्छा सर मेरा ये है कि पावर एक्ट 2003 को लेकर के एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल भेजा है स्टेट गवर्नमेंट को जिसको लेकर के ऑल इंडिया इंजीनियर एसोसिएशन ने ऑलरेडी लिखा था उसके ऊपर काफी आपत्ति उठाई तो सर इसमें मैं पंजाब का स्टैंड जानना चाहूंगा कि पंजाब में कैसे पंजाब का स्टैंड बड़ा क्लियर है एक we are a federal structure now they want to interfere also in this issue of power and put of ये लेते हो भी होना चाहते हैं अपने जो rates वगैरह ने जो tariffs हैं now this is not the case we are violating the federal structure everywhere and our constitution is high कि हमारे पास if this is the way the situation is going to be ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ whatever it is similarly financial situation की है we can't make जब मैं फाइनेंशियल रिक्वेस्ट की थी और प्राइम मिनिस्टर ने किया थी कि 2 लाख करोड़ मैं दे रहा हूँ पूरे 20 लाख करोड़ क्या है हमारे पास एक रुपये है नॉट इन 1 रुपी लेकिन मैं एक इतना उन्होंने दिया कि हमारी जो बोरिंग लिमिट है फ्रॉम 3% to 5% उन्होंने कर दी 2% इंक्रीज पर उस पर भी कह दिया you can use this for A, B, C or D. Yeah, that's not that. मेरे पैसे हैं, मैंने वापस करने हैं, मैंने इस्तेमाल करने हैं और वो बताएंगे मुझे क्या करने हैं. So these things is we are powers जो state के पास है are going and this has been noticed not from now but from the last from 1979 अनंत का resolution की थी. More powers to the state federal structure. The people then the Akali party then had raised this point. टाइम अगर कह रहे हैं हम लोग के ओवरऑल तक तुझे चक्की जाने और सोली बात तक फेडरल स्ट्रक्चर पड़ गया because he wants to keep his wife as a minister there and मैं फिर साथी रहना चाहता है बीजेपी का रहने दो. So federal structure means under the constitution when the constitution was made adopted उनको जो powers थे से सेंट्रल स्टेट वो तुझे मेंटेन करो. Otherwise, states will have no powers to function.
then we are just surplus. There's no need to have states come if you are going to decide everything there. दैनिक सवेरा का मिस्टर मोहित श्रीवास्तव। सर मेरा एक सवाल ये है कि सरकार को 1.5 साल बचे इलेक्शन मैनिफेस्टो में पिछले कई वादे हैं जो बचे हुए हैं नहीं हुए, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो या स्मार्टफोन हो या और भी पेंशन जिनसे बहुत सारे वादे पूरे नहीं उन सरकार इस वेले कोरोना की किसी कह रहे बहुत ज़्यादा संकट है, साढ़े को रेवेन्यू नहीं आ 1.5 साल से वादे पूरे होंगे मुझे अगले इंफॉर्मेशन ठीक नहीं जा रही बाहर, तो मैं इसके बारे में मैं आप लिख रहा हूँ बेस्ड ऑन द मैनिफेस्टो कि हमने क्या अचीव कर दिया, हमने क्या नहीं अचीव कर दिया और कब हम करेंगे, वो मैं अभी एक आध दिन में आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑफ दिस, आई विल गिव इट टू यू, दिस इज द टेकन ऑफ दिस जो कमिटमेंट्स ऐसे किया ने वी आर 100% ऑन दिस. लेट मी टेल यू लास्ट टाइम जो कमिटमेंट्स ऐसे किया से by the time the government went 100% had been completed, and same is our objective this time. तो कुछ एक आध हो जाए कि कोई काम रह जाए because of shortage of funds, because the situation is going, we will bring it to the front of Punjab कि हाँ साड़ा plan सीगा, हाँ साड़ा रह गया, and this is the reason जो है. लेकिन जहाँ का टेलीफोन्स की बात है, टेलीफोन्स का हम कर रहे हैं, कंपनी को लावा, it has some connection with the Chinese, though it is an Indian company, and उनके जो हमें ऑर्डर्स प्लेस किए थे वो तकरीबन तैयार हो गए. क्वेश्चन इज नाउ गोइंग टू बी कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, और क्योंकि कुछ लोग के गोडाउन में आ गए हैं ऑलरेडी, दे वांट अस टू लिफ्ट इट एंड सम दे वांट टू गिव अस बाय जुलाई. क्वेश्चन जब हम रखें अपने लड़कियों के लिए फॉर द फाइनल ईयर टू स्टूडेंट्स, तो उसके लिए कॉलेजेस मीट करेंगे, फिर उनको देना पड़ेगा, और हम दे सकते हैं नहीं दे सकते. हमारे आई डोंट नो व्हाट आवाज इक्विटी सिचुएशन कि कितना उनमें चाइनीज का हाथ है, कितना हमारा हाथ है, सब अब देखनी पड़ेगी जो बातें चल रही हैं. तो उसके बाद लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन आई कि 50,000 is ready in the godown and 50,000 they want to give us in July. But now I have a decision to be made on number 1 चाइनीज का कनेक्शन कितने के साथ तक है, और नंबर 2 जो हम ले सकते हैं टू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं कि कॉलेजेस स्टार्ट एंड स्कूल स्टार्ट ये मुश्किल होता है. हर गाँव में हम जा नहीं सकते, वो वहीं करना पड़ेगा जब स्कूल और कॉलेजेस मीट होंगे. Mr. Naveen Sharma from HD. Yeah, sir, Navjot Singh Sidhu was the minister in your cabinet. He interacted with NRIs today, and he blamed all the governments since 1997 for pushing Punjab into indebtedness and for Punjab slipping from the number 1 position. So, what do you have to say? Well, I don't, Mr. want to comment on what Mr. Sidhu has said. Thank you. I can tell you that Punjab's economy has faltered. There is no doubt about it, and that has happened over a period of time. And this is not now. This started from the terrorist period. उस time भी कहीं उन्हें पता होना because they were not there. All the forces that were used in Punjab, whether it was border security force or military or whatever, Punjab government had to pay for. Till that time, Punjab was in a surplus state. Then this whole bill came out to us that for 10 years or more, how many years, 15 साल लगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੌਜ ਰਹੀ, ਜੋ BSF-CRP ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੋਈ. That's when we started going in the red. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਰਕਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ I took it up in the last government, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ government ਨੇ take up ਕੀਤਾ. We took it up with the respect of various prime ministers and ministers. ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. It's still on part of this debt book. Sada debt to over 2,20,000 crores hai. It is part of that debt. All this is accumulated. So one more question I have. You set up a committee under Montek Singh Ahluwalia for the state's revival, economic revival. So what is what's happening on that?
Any update? Yes, it's very much an update. I received Mr. Ahluwalia's first committee report. Mr. Ahluwalia made 6 committees under him. One for industry, one for agriculture, one for various things. And the first report that came, I received was about 10 days ago. And I've been told, he has promised me that all 6 committee reports put in the final shape will come to us by middle of next month, July. So we will have it with us. And that is restarting. Basically, it is a committee to restart Punjab's economy. And only which big Monday was training, plus he was allowed to add on more people, which he has added on. And they are all experts in various fields throughout the world. So he is working on video conferencing with them. Some are from New York, some are from UK, some are from Europe, some are from somewhere. But सारे agree करते हैं जो पंजाब की मदद करनी है. Punjab is fighting this battle and they need to get this assistance. Some of those people are not Punjabis, they are not मदद चाहते कर रहे हैं. तो ये बड़ी खुशी का है. और I hope that by 15th is promised and wanted to ने मैंने मुझे पहले रिपोर्ट करी थी वो भी प्रॉम्प्ट की किसी एक डेट का और डेट दे मैंने चाहती थी. तो आई एम श्योर दैट काम प्लान जब आऊँगा थोड़ी ना शेयर करूँगा सर. Mr. Naveen Singh from Living India. प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो भी बड़ा रेट है हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ educational institutions to like कि सरकार की planning है during this COVID and secondly जो investment की बात बार-बार आ रही थी कि पीपी किटाणु लेके पंजाब सरकार ने लिस्ट में शुरू किया कि ਅਸੀਂ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ सो इंडस्ट्री ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ during COVID ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋੜ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ पहली बात तो एजुकेशन की है. एजुकेशन मैं टोटली the department. You can, and this is also here, it's in the High Court also. If you are doing this video conferencing and teaching children, you can charge for video conferencing. But you can't charge for lunch. You can't charge for use of buses. You can't charge for maintenance of building. That is not possible. That is not allowed to be allowed. Because parents who pay करेंगे, वो अपना बच्चे physically जाके पढ़ेंगे. Not for this. But yes, for social, doing it on this what's this called, this television thing, or to see, or the last year charge person. I think that is what our government is going firm on. I am not for, I am totally हो रही है, and if any school thinks that they can break the law, then we will deal with it. That's the only way to do it. दूसरी किसी को इंडस्ट्री पंजाब की इंडस्ट्री देखो, we have an Invest Punjab program and that is doing a very good job. We have a lot of interest in Punjab. That is called COVID to Pena. मेरा ख्याल hundreds of people have come for joining us, including Imam, which was one of Israel's Dubai's biggest groups. Pena की आए हुए से वो भी होना छोड़ दे. There are a lot of Americans, a lot of Germans, and Spaniards coming to me, and every country coming to me. Say कि ਅਸੀਂ थोड़े होते रहना चाहते हैं. Now, particularly with this China exit from China, वो भी ਅਸੀਂ उसको देख रहे हैं. So Invest Punjab is looking at it. Certainly, it is going to be delayed because COVID is affecting सारी दुनिया में which they affect पहले. But we hope that a lot of people are now looking at us. And we have told them that we have 3,200 acres ready for them in 4 locations. And ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 300 ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੁਧਿਆਣਾ. ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਟਕਾ ਫਤਿਹਵਾੜਾ, ਕੋਟਲੇ 4 places totaling up to 3,200 acres ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ. And ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ for that future is industry. Agriculture, दिन पर दिन सारा फर्क है. Times will change, crops will change, industry will come to support it. But basically, other states are becoming growers. Now
जिन्नी साड़ी कणक की फसल है कि कह रहे कि पंजाब की इन्नी फसल नहीं होनी जिन्नी मध्य प्रदेश में इज नॉट करेक्ट। साड़ी फसल इसलिए घट 127 लाख टन साड़ी आई है मध्य प्रदेश की 127 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो जी साड़ी आनी सी साढ़े मंडिया राजस्थान तो हरियाणे तो वो आई नहीं है। आई इसलिए नहीं क्योंकि असं ट्रक नहीं चलन देते, बॉर्डर तो सील कोविड उन्हें आ देते। उस तो अलावा कोई 50 लाख टन से समझते हैं कि लोगों ने अपने घर रखी है अपने वास्ते भी, और जो समय आऊगा बेचने वास्ते वो समझते हैं कि प्राइसेस विल बी बेटर विद द सिचुएशन जो आज एग्जिस्ट कर रही है पंजाब। सो इट इज पंजाब के विच ये फसल बदल जाएगी बिकॉज अदर स्टेट्स आर कमिंग अप, जैसे मध्य प्रदेश दसे लाइकवाइज राइस जे भी साडे नर्मदा वाटर नर्मदा इरीगेशन स्कीम से स्थापना कावरी इरीगेशन स्कीम का काम गंगा जमुना बेसिन है बीइंग कवर्ड बाय राइस प्रोडक्शन। तो चावल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है साढ़े को। प्राइम फूड मिनिस्टर का बयान पीछे भी आया है कि 3 साल में चावल नहीं होना को दैट इज वाई उन्होंने चोरी है जी एमएसपी की गल करी जाती थी। डॉक्टर लाइन के पंजाब ने 60 साल तो असी इस देश को अनखवाया। इस देश के एक समय होता सी एक अमेरिकन PM480 फंड विच वो सानू फूड देंगे से और इतने इन्वेस्टमेंट करते थे हिंदुस्तान छोड़ चीज़ा इंडस्ट्री वगैरह में 480 एंड 480 इन 1966 साढ़े जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होया वो 480 2 साल के विच ही पंजाब के किसानी ने खत्म कर दिता एंड वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट आफ्टर दैट। तो ये सारी तुसीं हिस्ट्री नहीं भुल सकते वो तुसीं जब सूट नहीं करते तो वो कहते असं बात करा MSP हाउ वी वुड 70% मेरे किसान 5 साल ऊपर नहीं कटो कट वो कितने अब नहीं 70% है मुंडा जो बेचारा गरीब मरे घर ही ना और फादर के को 2.5 एकड़ जमीन। That is the situation all over the place. So it is critical. We are not complex in this. And I think the Kalidal should wake up on this issue. Mr. Deepak Sharma from Amrinder. Please subscribe. सर गुरबंद मानू लगातार पंजाब की जी नौजवान पीढ़ी और टारगेट कर रहे कि खालिस्तान वास्ते सारे नौजवान पीढ़ी को फोन कॉल्स कर रही नौजवान पीढ़ी उन्होंने चांसेस ना आ रहे लगे कोई खास उन्होंने या फिर खान पान वास्ते कोई खास उन्होंने देखो he has been as far as Government of India is concerned this organization is banned as an anti-national organization. It is very valid. दूसरी चिंताएं what he is doing here and लोगों ने terrorism में कुछ किया हुआ है. We have informed the requisite departments overseas, including Interpol, that this man is engaging in militant activity. हथियार भेज रहे, objective जो मर्जी होए, हथियार भेज रहे and grenades वगैरह भेज रहे, explosives भेज रहे, and he has to be declared an outright terrorist organization, which India has done. And sure he will be. लेकिन जितने टाइम भगवंत सिंह पन्नू का काम है, he is a well-known factor in America. कई सारे दोस्त तो ले रहे हैं, no body their restriction, सारे जानते हैं कि पैसे बनाने और मैं और लेकर का गवर्नमेंट से तुझे को लेकर के पोस्ट कर दे। I have seen this post. मैंने वो क्या है तो पढ़ के देख मैंने आपसे सीधा करते हैं सीधे तो आज told him that. So don't एक गला नहीं है सही ऐसे चलन दे रहा है भगवान सिंह वो होने वाले थे इसको जो मर्जी करे अपने बोले टेलीविजन पे ऐसे कोई एक जरा रेफरेंडम कमेटी हुआ है ना कि इसको हुआ Mr. Pankaj Kamani, music. सर हाँ जी सर क्योंकि चाइना में लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं तो जो स्मार्टफोन देते हुए ने ऑर्डर देते हुए ने की पंजाब सरकार कैंसल करेगी कि स्मार्टफोन जो चाइना की कंपनी को टेंडर देता है किसी इंडियन कंपनी को टेंडर देता जाए जैसे देखो कंपनी को लावा समथिंग लावा जब मैं परफॉर्मेंस से के मतलब देखना पड़ता है कि वो इक्विटी सिचुएशन की है इज इट चाइनीज इक्विटी और इंडियन इक्विटी बिकॉज इट इज एन इंडियन कंपनी है जी उसी ऑर्डर देता है वो
ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਪਰ 50,000 ਜੁਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ's involvement in this to what extent ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ACC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ नहीं देखो जितना करता है कर रहा था फंक्शन है he is the 220th man who has spoken on Indian issues these are NRI issues and those are Iman those are Iman in NRI so he is a good speaker there is good doubt so he is speaking but as far as coming into the Congress party he is already in the Congress party can only chutting पर कोई इन्वॉल्वमेंट के करना चाहते हैं दैट वुड बी ए कांग्रेस प्रेसिडेंसी कि दिल्ली में जाना चाहते नहीं और जाना चाहते नहीं है तो मत जाना चाहते न्यूज़ 24 मिस्टर विशाल निवेश ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਹੋਵੇ ਸਤੰਬਰ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਨਾਲ देखो आई होप एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रोक सकते हैं जो बाकी सुनिया चाहिए बट वो साढ़े के हो छोटा बड़ा मेजर नो बेस्ट इफ यू कैन हेल्प अस कन्विंस पीपल के ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन टोटल सारा सेवाई है एक साल यूनिवर्सिटी काम करनी फिर साल वो चीज़ आते कदम चक्कर पहले नुकसान तो नहीं होगा साढ़े बच्चों का होगा दे वोंट हैव जॉब्स दे वोंट स्कूलिंग वोंट बी डन स्कूल कैसे खुलेंगे इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो इट इज नॉट ए वेरी मेजर प्रॉब्लम सो आई होप कि जो तुसी दस रहे हो दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन वी कैन हॉल्ट बाय कन्विंसिंग पीपल कि ये मार्क्स वगैरह रखन और दैट इज द बेस्ट मैं सुनिया सी somebody who is the head of the biology institute I think UK दा वो कह रहे थे कि 75% of the safety is masks. Then so much for social distancing, so much for other things. But mask is the main thing. That is why mask रखना बहुत जरूरी है. अब जिस तरह से दिल्ली तो लगातार ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੂਗਾ नहीं देखो मेरे को 12,000 ट्रक हो जाते हैं और कुछ 6,000 गड्डियाँ हो जाती हैं वो 6,000 गड्डियाँ से अगर किसी को कितने बंदे ही नहीं फिर भी 18,000 बंदे तय हो गए ट्रक के लिए दो का हो गया एक क्लीनर होगा एक ड्राइवर होगा 24,000 एक हो गए तो 40,000 का बंदा डेली आने सारे what do we do with this और अगर ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਉਹ ਮਾੜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਓ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਂਡ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਚੈੱਕਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੀਮਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਚੈਕਿੰਗ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਮੈਡੀਕਲੀ कि after 14 days अगर फ्री हो सकता है तो फ्री करो otherwise if he is then he has to go for medical isolation एक करना तो से सारे it is a problem but we are going to we have to tackle it सर दूसरा सवाल हैगा कुछ दिन पहला ही पंजाब पुलिस के आईजी ने मोहन विजय प्रताप उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी बैकल ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ 4 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ प्रकाश सिंह बादल दोषी है कि नहीं he did not say that he went to the court and he said in the court that this relation the judge this should be shifted from this judge out because of the रिश्तेदारी होते हैं वो judge के नाल and वो the picture उन्होंने कहा सी कि we can't get justice because the Badals are not in this case but some other cases that are relevant to this case. There is no question of anyone being accused. Accused now only when there is a case goes to the court. उन्होंने 4 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
he is only interested with one case. Then there is Mr. Katra who is doing one case, and there's another one who's our SSP in Gurdaspur is doing the third case. So their case may case but this statement we made that a person is accused. Nobody is accused till such time as the case comes up to the court. At the moment, there's nobody accused. Investigation chal rahi hai. ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? इन्वॉल्वमेंट का काम होगी इफ इज अक्यूज जब तुम दस रहे हैं कि हाल में कोई अक्यूज ही नहीं है लेट दिस सिचुएशन कम अप टू दैट पॉइंट जब केस जाके कोर्ट च एंड फुल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन्वेस्टिगेशन पूरी होएगी अक्यूज बनेंगे इट विल बी पुट इन कोर्ट बट हाल तक का इन्वेस्टिगेशन नॉट बीन कंप्लीटेड लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ but I can tell you what I जो मैं कह रहे हैं I'm sure थोड़े छोटे वकील भी होंगे lawyers who know the background. This is not, you cannot just hold a person accused by saying that you are accused. Or the investigation in which he must be proved to be accused and then put it forward. ਇੱਕ ਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ I hope not. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਓਪਨ ਮੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਈ ਗੈਟ ਅਬਾਊਟ 5 to 600 posts out of which about 300 are saying कि जिम खोल दो ਹੁਣ what can I do आपका मैं जिम कैसे खोलूंगा because gym is not see they don't understand बच्चों को नहीं पता this is not a state emergency or disaster relief. अगर मेरे हाथ से होती I would consider something, but this is a national disaster relief. And national disaster relief is we are told by the government of India कि तुसी कितने नहीं जा सकते हो. वो तो तुसी आगे बढ़ा सकते हो पर घटा नहीं सकते. Now they have opened everything, including hotels up to I think 50% of retailers. लेकिन जितना gyms है gyms are being totally closed. The gyms are not, the only thing that is not open is gyms. They must be having the reasons कि उन्हें कुछ एक machine एक लगाया. Mohammed Ghazali from NDT. Sir, I have two questions. One over the Chinese incursion. Since whenever there is a national security issue, the BJP manages to push Congress to the corner, terming like anti-national. Whenever you raise questions, be it Balapur strike or surgical strike, so why Congress is scared to push its own narrative? And the second one is that is over the cabinet. On the bureaucratic issue of the appointment, that your party decided that assembly tickets would not be given to two people from the same family. So how come this appointment? Because the opposition says that it has been done at the behest of NSA Mr. Doval. So please. Firstly, let me tell you, I've seen that happen on some people again. First, let me tell you, Mr. Doval last I met was about 1 year ago, and I met him in connection with the national security matters which are related to Pakistan. That time it was Balapur and all these countries of which I just told you what is happening in it, and we have to have a concerted effort to oppose it with the central agencies, with IB, and DSF and other agencies who work for this. So I can't give more details on that, but that is our job to meet with the national security advisor. That was 1 year ago. What has Mr. Doval got to do with the selection of any officers in Punjab? That's my job. I select officers, nobody else selects officers here. And I select the best that I have. And I select my chief secretary and my DGP who I consider best out of their own services. And I don't see why Doval comes in. Where does Doval come in the picture? What is his role in it? No role in this. That is one. The other, what were you asking? The other one was how BJP manages to push Congress every time when it comes to the issue. No, that is because they are in government. I mean, they go on the offensive and they are the ones who have to take the decision. Balapur took place in their time. Pulwama took place in their time. Chinese actions in Doklam was their time. Chinese action on Garwan is their time. So what
what can we say? We only can say what I am saying today is what the Congress Party can say. What we come to know and tell them to be careful and to do this and do that. But they try to put it on us by saying, oh, in 1962 this happened and the war took place. When it took place, so then what? It took place against Pakistan in 65, it took place against Pakistan in 47, it took place in Pakistan in 99, it took place in Kargil and it took place in 71 in Bangladesh. That is our job. We were government then. We took the full responsibility for those things then. And we won all those battles. What about now? Now this is their responsibility. And they can obviously, we as an opposition can only question them. The answer and responsibility lies with the government of the Republic, both for the Chinese incursions and for Pakistani incursions. Mr. Jai Singh Chippa, Punjab Channel. Captain Saab, ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ मतलब विश्वासघात किया इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक तुसी मेरा इंतजार कर लो मेरी चिट्ठी का मेरा जो मैं थोड़ा आर्टिकल भेजांगा वो देख लेना देयर आर रीजंस फॉर दैट पोटैटो का प्लान क्योंकि नो आज पंजाब सर्विस पार्क है विदाउट दीज प्लांट्स बट रोपड़ भी बंद है लहरा मोहम्मद भी बंद है बठिंडा भी बंद है वी आर बाइंग पावर ऑन द नेशनल ग्रिड इज मच चीपर आज नेशनल ग्रिड तो तुसी जितना मर्जी पावर ले लो ₹2 ढाई है साढ़े नाले ने at ₹6 or ₹5.5 or ₹7 or something. तो एक गला की देखने का बैठ नहीं है. So जानो when I give that article out, तो सीधे भी सारे में लगा करना है. मैं तो थोड़ा background बता. जितने नसी आए first cabinet meeting 50% नसी approve करते हैं ऐसे जो agreements जो एक साथ जो ऐसे commitment किया ऐसे अपने manifesto में because उन्होंने कोई financial implication नहीं थी. ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਪਰ ਅੱਧੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੋ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਰ ਓਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ This is one of the reasons that is there, that it is very expensive power that अपने आप generate करने और जेडी और पूजा सिटी कैसे बिजली का बिजली Sir has to attend a meeting. Last two questions, please. Mr. Rajvi. My question is on the excise policy you set up by SIT on the liquor smuggling revenue issue. So can we know what's the outcome, what's the status? Still working. We are trying to find out where there was, to my mind, during this lockdown, when liquor was stopped, there was a certain leakage, and how it will leak, where it will leak, who leaked it, which industry is involved, which is not involved. Sariya hone a report will come. It's not easy to do it. Here is a list here which I get now daily to show what is the situation, which I think you should see. What is it? Every day from which city and how much industry is opening up, city-wise, area-wise, every day which district is selling how much liquor, what is the situation as of today, and how is it growing. Because each liquor for me means taxation, and taxation means my revenue goes up. I don't have money. I mean, अगर मेरा कोई पैसा GST का नहीं आएगा, and I don't
don't get from my own revenue sources and how do I run the state. Is करके I take a daily report on both these things, and the figures are there. I can tell you also, it's growing day by day. We have, and we are asking that this business should stop of this smuggling in from other states. The reason is very simple. Punjab liquor prices are much higher than our neighboring states. Chandigarh is lower, Himachal is lower, Haryana is lower, Rajasthan is lower. So people look जाके इनोवेशन की कोशिश कर रहे हैं and और एक रिजल्ट ये होगा कि मेरी अपनी से कट जाती है. Now we have talked about it has gone up to 16.9 crores was yesterday's sale. So it just is so that I keep an eye on what is happening and where this revenue comes from. So then I must करना पैदा है. But ALH ਜਿਹੜੀਆਂ एक कमेटी है, the सरकारी कमेटी रिपोर्ट आगे सारे पैटर्न रहेगी, including the smuggling from other states and फिर सारे दसेंगे. Plus our own illegal distillation जो ऐसे हो गई है, वो भी सारा देखते हैं. Last question from my only lady in the media. I want to ask a question. I just raised a voice for missing women on media. So I'm the only woman here, and I would like you to use your influence to see that media houses जब नौकरियां काट रहे हैं, ladies ना करते हैं, because आज सारे मर्द में से आप the only woman here. So I am just raising voice for the women missing here. So I'm not asking you any questions. Everything has been talked very well. I will certainly listen to the ladies' voices. Thank you so much. Thank you so much. I have just raised my voice. I'm not asking you. एक सवाल थोड़ा लगा. So my question was that drug जिन्हें नशा है काम तुसी बहुत बढ़िया काम किया है मंदी हम पर जिन्हें कोरोना आया माफिया ने अपने आप को डाल लिया है काम ड्रग्स असली की डिमांड है उसको नहीं कंट्रोल कर पाए जो बच्चे हमें नौजवान की डिमांड है. Is there a strategy just to focus on the demand? नहीं ऐसे क्यों कर पाए? जी डिमांड है ड्रग्स वास्ते. Drugs? Yes. No, good question. देखो as far as this is concerned, एक situation there, we have broken the drugs to a large extent. Let me tell you, this is what has helped us is also COVID. Because COVID is done, any activity like 41,000 policemen are just patrolling the streets for COVID. और उन्हें ना रुकावट दी कि drugs के लिए काफी हद तक होती है. Now obviously the prices are much enhanced because of shortage, but ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. That this is very much there. जितने टाइम ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ who are involved in this, we have got de-addiction centers, we have got rehabilitation centers. Our STF is working on that with the health department. वो very much under control है. पहला सारे de-addiction centers कोई ज़्यादा से प्राइवेट ज़्यादा से वो सारे साढ़े बार काम बना गए. And most of our de-addiction centers are absolutely full. Koई problem and we are treating them. There was then as you know, then again somebody starts doing the selling of this drug which is used. एक चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ this also is unfortunately because you need a drug to kill that drug and वो drug ही बेची जाने लगे. So corruption seems to be everywhere. It is unfortunate. Thank you so much. Thank you very much. One question. Sir, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਲਿਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪਛਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤੂਰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕੋ ਲਾਸਟ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ. ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਕੋਈ? देखो this is affecting सारे को affect कर रहा है. और जितने टाइम ਜਦੋਂ शुरू हुई है कोविड उਦੋਂ सारे प्राइवेट इंडस्ट्री ने थोड़े इश्तेहार देने बंद कर दिए एक्सेप्ट फॉर पंजाब गवर्नमेंट.
वकील भी मानते हैं और मानते हैं कि सारे कोर्स बंद पड़े हैं मीडिया का सरकार की मदद करता है जी हर टाइम ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦੇਖੋ 15,000 ਕਰੋੜ 15,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੋਰ ਨਾउ ਤਾਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ माइक मेरा मैं किसी माइनिंग माफिया या पूरे माफिया राज के विधानसभा के अंदर एक लिस्ट प्रोड्यूस की थी कि मेरे को सबके नाम है मैं चाहता हूं कि वो लिस्ट I never produced a list saying my mafia list. कि मेरे को माफिया माइनिंग माफिया की लिस्ट है तो भी that was not mining. I think that was liquor mafia or mafia सारी माफिया absolutely सिर्फ लिकर माफिया दे नहीं बट एवरी माफिया कम अप ऑन टॉप ऑफ इट ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣੇ ਨੇ 7 ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕॉज ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ बट सरकार को कोई आरोप नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਮਾਫੀਆ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ कैप्टन साहब एक नवजोत सिद्धू ने कहा कि ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ Please send Mr. Badal, Mr. Sidhu to look at although I see a Tamil Nadu is doing very well. So she can take care of it. Tamil Nadu is doing you know, Tamil Nadu doesn't have any say of this local who's desi Shirazi will deal with it. They only have IMF and they naturally the rates are much higher. So Sada majority say in Punjab is desi Shirazi. So that is the problem which is so he because he wants. Fact is that after that report came from Mr. Sidhu, the department did a full investigation on this. And this was the reason that though their sales are higher, they are higher because only IMF and Punjab is lower because we are more than 50% is desi. पर सर आरोप तक कई केबल माफिया भी है सर मैं कई बार कहा कि केबल माफिया चीजें नौनिया लाभ से होनी है मैं किसी बात नहीं करता सिमिलरली ऐसे ट्रांसपोर्ट की नौनिया ट्रांसपोर्ट लाभ में बात नहीं करता आई एम नॉट इन द जॉब ऑफ सेंसरशिप माय जॉब इज टू एक्सपैंड द बिजनेस जिन्हें कुछ अपने बिजनेस नौनिया शौक है मैं से थोड़ी मदद करेंगे पर एक कहना कि मैनू ला दे और वो बंद कर दे और लगता ਸਰ ਜਨਰਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ में तो कंटिन्यू हो रही है माफिया but that is happening we are doing as much as we can to get on that so sir what can I tell you you want me to read out some names I'll read out who are the names I can't give you detail of the customers. Let's put up there. मैं दोनों जैसे हैं what a difficult time तो भी नहीं पता कौन है या मैंने भी नहीं पता कौन है but there it is there. This is district Gurdaspur. कुलदीप सिंह, कुलविंदर सिंह, दलवीर सिंह, रामपाल, विजय कुमार, हर्ष, राजेंद्र पाल, राकेश बिगड़ हो गया जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्मगलर्स की लिस्ट बड़ी से एवरीवेयर एवरीथिंग रहता भी है ये सब कुछ है फैक्ट्री वाले तो फैक्ट्री वाली केड़ा किन नाम से वो जिला
हमारी लंच तैयारी खाना तैयारी लास्ट क्वेश्चन जी सर माइक ले लो जी माइक लास्ट सुनील कुमार, राजू, कमलेश कुमार, शालू। ये सारे पड़े हुए नहीं पाए। आम आदमी पार्टी अकाली दल ने बोला से कि हम आप सीएम फेस लेकर उतरेंगे 2022 में, तो कांग्रेस का फेस आप पहले ही कर चुके हैं 70 सीटें काफी आपके साथ है, तो 2022 में आप ही चला रहेंगे या कोई नए लोग उम्मीद करेंगे वो भी आगे आ सकते हैं? सर माइक ले लीजिए। मेरा जॉब है टू सी दैट पार्टी का बैटिंग पावर, आई एम हियर बैटिंग पावर, दैट इज माय जॉब। उसके बाद हु इज मेन हु कम्स दैट इज कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ माय, तो इट इज दैट इज वेरी वी आर गोइंग टू लाइक दिस। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तेलंगाना गवर्नमेंट ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने 5 करोड़ रुपया शहीद के परिवार को दिता जी, 5 करोड़ 5 करोड़ जी ਜਿਹੜੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਬਾਬੂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਬਾਬੂ ਫਰਮ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਸ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ? No, no, every soldier gets. Don't think this is only what Punjab gets. Every soldier is insured. Every soldier gets money from the government of India. वो तो Ministry of Defence and government of India work करती है। ये तो अच्छी आपको बात है। पर 5 करोड़ पहली बार हुआ है किसी ने देता। That is we have at least in my time मैं उन्हें चेक करना है कि वो है या नहीं, पर जरा परमिट चेक करा लेना है वो बस 3 करोड़ देंगे। And I think Mahavi check has 1 crore, we got some rate on that. उस बात से कभी बाबू Mr. Force उन्होंने फैसला किया है कि हम ये करें इस पोजीशन में उन्होंने कि नहीं देना चाहिए, अच्छा किया है। More our soldiers get better. Unfortunately, Punjab is now in a situation at the moment कि मैं इसको वोट बना सका 10 लाख